Hi guys, I just don't want to stop. They are really good. Hello Glow Liquid Filter. Hi guys, welcome back to my YouTube channel. Today we are going to be doing a full face of E.L.F cosmetics and today's color is purple. Let me know so far if you are keeping up with the series, if you're liking it, if you're loving it. You can just let me know because हम बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं and I'm just super excited, just very emotional right now because we are almost coming to an end of these series and I just don't want to stop doing one brand tutorials. Like there are unlimited brands in this world, so we're gonna try a lot of them and yeah, so let's just begin with makeup. Okay, so today we are doing E.L.F cosmetics. E.L.F के मैंने बहुत सारे products online मंगवाए थे, but I'm gonna start off with the E.L.F Instant Lift Eyebrow Pencil. E.L.F के product काफी अच्छे हैं, like I'm not kidding, they are really good. Some are very affordable, some are like on the expensive side, but I am not mad. By the way, ये वाली pencil मैंने पहले try की हुई है. I'm not a big fan of this pencil honestly, but I'm still gonna use it because it's E.L.F, right? So it's really good if you want to fill in your eyebrows. Like it's okay. और इसकी pencil बहुत मुझे thick tip लगती है, so I feel like you are unable to create hair stroke using this. Super quickly just going to fill in my eyebrows using this. कुछ ज़्यादा मैं shape वगैरह नहीं कर रही हूँ because से वो हो ही नहीं पाएगा. तो अगर आपके बहुत ही बुरी eyebrows है ना and you don't need any brush stroke, you can just get your hands on this pencil very cheap. Also और जब सेल लगी होती है तो ये और भी सस्ती हो जाती है. और मुझे आज मेरा hairdo नहीं समझ आ रहा था तो I'm just doing it. मतलब जो मुझे सही लगा मैंने किया. अभी end वीडियो के end में we will of course change the hairdo, but right now this is what it is. Okay, so that's eyebrows. Okay, so हाँ, तो eyebrows are done. Now we are going to पहले eyes करें कि पहले face. Let's do the face first क्योंकि मैंने सारी सीरीज में अभी तक पहले आई लुक ही किया है, तो आज हम पहले फेस करेंगे. एंड सो फॉर दैट आई एम गोइंग टू स्टार्ट ऑफ विद द E.L.F पटी प्राइमर. दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट प्राइमर्स ऑफ ऑल टाइम्स. लाइक जब भी मुझे कहीं जाना होता है मैं यही वाला यूज करती हूँ. आप देखते हो कितना ज्यादा यूज करती हूँ मैं. मेरा बच्चा प्यार मैंने कहा ये तुम्हें कहाँ से कौन दिख रहा है. नाउ लेट्स डिस्ट्रैक्ट कर दिया गुगू यार. बाय द वे पीपल वर आस्किंग हर नेम. वी नेम्ड हर युविका. हर न्यू नेम इज युविका. दैट माय प्राइमर. इससे पोर्स भी काफी अच्छी मिनिमाइज हो जाती है एंड फिनिश भी बहुत अच्छी आती है. सो प्राइमिंग इज डन एंड ये प्राइमर से पोर्स भी मिनिमाइज हो जाती है काफी हद तक और मतलब ना अच्छी सी फीलिंग आती है, स्मूथ हो जाती है. नेक्स्ट आई हैव अ वेरी एक्साइटिंग प्रोडक्ट एंड अ वेरी वायरल प्रोडक्ट. दिस इज द E.L.F हेलो ग्लो लिक्विड फिल्टर एंड आई हर्ड कि इसका जो शार्लेट टिल्बरी का हॉलीवुड फिल्टर है ये उसका ड्यूप है. सो यस, इसमें काफी सारे शेड्स भी अवेलेबल थे तो मैंने थोड़ा सा मीडियम टोन शेड ही ऑर्डर किया है. एंड अगर ये शार्लेट टिल्बरी का ड्यूप निकल मतलब मुझे पता नहीं है, मैंने वो ट्राई नहीं किया प्रोडक्ट, बट ट्राई दिस ऑन माय फेस. दिस वन इज इन द शेड 5 मीडियम टैन एंड इसको मतलब सिर्फ 5.3 लगाना है. लाइक योर थोड़ा सा डार्क है ये, बट ये फाउंडेशन नहीं है. इट्स लाइक अ बेस फॉर योर मेकअप. हेलो ग्लो लिक्विड फिल्टर. सो देखते हैं. आई एम गोइंग टू टेक अ ब्रश टू ब्लेंड दिस आउट एंड वी विल सी हाउ दिस लाइक. सो पीपल से इफ यू आर गोइंग आउट, लाइक अगर आप मतलब सिर्फ ऐसे कहीं घूमने जा रहे हो, मतलब डेली वेयर के लिए अगर आपको कुछ लगाना है फेस पे, जस्ट पुट ऑन दिस एंड यू आर गुड टू गो. इट जस्ट मेक्स योर स्किन रेडिएंट एंड थोड़ी सी कवरेज. इसमें बिल्कुल हल्की सी कवरेज भी है. इट्स लाइक वेरी डिफरेंट प्रोडक्ट. आई हैवंट ट्राइड समथिंग लाइक दिस. और इसमें ग्लो भी है, लाइक एडिंग दिस शाइन एंड लिटिल बिट ऑफ कवरेज और बहुत इवन टोन कर दिया स्किन को, जो मतलब बिल्कुल अलग अलग टोन सी पहले. और मुझे कलर भी इतना बुरा नहीं लग रहा है. आई वांट टू अप्लाई अ लिटिल बिट मोर एंड सी इसमें कवरेज है या नहीं. यस, इट हैज अ लिटिल बिट ऑफ कवरेज, नॉट फुल कवरेज ऑफ कोर्स, बट रियली नाइस. शेड थोड़ा सा डार्क आ गया बट आई विल वर्क विद दिस क्योंकि फाउंडेशन का शेड एनीवे थोड़ा सा लाइट है मेरे पास. आई एम एक्चुअली रियली लाइकिंग दिस. अगर इसमें मेरा एग्जैक्ट शेड होता ना तो आई वुड हैव लाइक अप्लाइड दिस एवरी सिंगल डे. नाइस. Next up, I have this foundation. By the way, in case you're wondering, Bahu is sitting right here with Gugu. That's why I'm a little distracted. This is the foundation. This is in the shade Sand 300. और आज हम मूवी देखने जा रहे हैं. Probably, शायद कौन सी? फुकरे 3. अगर आपने देख रखी है तो please leave a review. So this is the foundation. I love this foundation. It has satin finish. So yeah, I was saying this foundation has satin finish and that is very true. It's like medium coverage, a little bit buildable, but ये full coverage नहीं है, which I am not mad at. और मुझे शी ग्लैम के brushes बहुत अच्छे लगे, like they are amazing. I'm using my current favorite foundation brush. This one is from Mars and this is called F01 foundation brush. Let's blend this foundation out. See ये कितने अच्छे से blend हो रहा है with the brush and underneath जो भी हमने Hollywood filter लगाया है, that is looking amazing. So
over the Hollywood filter, sorry, what is this called, Hello Glow liquid filter. This foundation is looking even more pretty, और ये थोड़ा सा coverage और ज़्यादा दे रहा है because मैं भी थोड़ी सी थी and I'm loving it. So that is my base. Now I'm going to use my favorite concealer from E.L.F. This is in the shade tan neutral, और ये concealer मतलब it's like very good, और इसमें shade भी मेरा एकदम perfect है. ये फटाफट से conceal कर लेते हैं. You guys know how much I love this concealer. I'm also going to prep my eyelids using this and cover a little of the blemishes. So okay, so this is the concealer. होने वाला है ये भी थोड़ा रह गया. Okay, let's blend this beautiful concealer out. Also guys, अभी तक आपका favorite नवरात्रि look कौन सा रहा? Let me know in the comments. I am very curious to know. Guys, I don't have a loose powder from E.L.F. I'm so sorry. So this is the concealer all blended. Look very beautiful. So अभी हम foundation थोड़ा सा hair से remove कर रहे हैं, गलती से लग गया था. Okay, now I have this lip lacquer जो मैं use करना चाहती हूँ as my blush for today. तो अभी मेरे पास है ये lip lacquer E.L.F. I'm not sure इसको मैं blush की तरह अप्लाई कर सकती हूँ कि नहीं, because it is going to look very glossy. इसमें pigment भी बहुत कम है. And just dab. I need to dab this product on ताकि foundation नहीं निकले. So it's giving me nice color, but it is very sticky. Of course, that is very much expected. Stickiness is expected from a gloss. But मुझे लगा था मैंने लिपस्टिक ऑर्डर की है और ये ग्लॉस निकला. ये मतलब मेरे हर वीडियो में कुछ ना कुछ गड़बड़. So this is that is मतलब मैं इतना ही लगाने वाली हूँ, नहीं तो मेरा बेस खराब हो जाएगा. तो इसमें बिल्कुल हल्का सा कलर आया है फेस पे, not too much. Next I am going to use a highlighter which is a jelly highlighter before setting my base in place. I really want to use this cause set करने के बाद ये हम नहीं अप्लाई कर पाएंगे. And I'm gonna take a flat brush today. So I'm going to take a flat brush and this jelly highlighter. Oh my god, this highlighter is removing the foundation underneath which I hate. Okay, so इस साइड से remove किया. I think मैंने थोड़ा सा swipe कर दिया था. Kind of have to like work really fast with this highlighter. ये dry हो जाता है आपकी स्किन पे बहुत जल्दी से. अभी मेरे पास उसका दूसरा highlighter भी है तो अभी मैं ये ज़्यादा अप्लाई नहीं करूँगी. But I don't think so. You can skip the jelly highlighter from E.L.F. because see अभी मैंने अप्लाई किया और ये blend भी नहीं हो रहा है. It's like a very I really don't like that. अभी I'm gonna set my face using Sigma setting powder. I'm sorry, I have to because मैं भूल गई ऑर्डर करना. फटाफट set करती हूँ and I'll be right. Okay guys, so the base is almost done. I also have this clear mascara and eyebrow clear brow gel and I'm really excited to try this out. Okay, so finally खुल गया. This is a clear brow and lash mascara. This is how it looks like. I'm going to apply this on my lashes. This is called, I'm going to use this and this is like absolutely clear invisible product. This made my hair and it is really nice guys. ये बिल्कुल product दिख भी नहीं रहा है कि मैं apply कर रही हूँ and because of course it's clear. Let me tell you one thing, I haven't in my life ever applied a clear eyebrow like or mascara. And if you in case don't have a particular category of the product like a blush, highlighter, contour, just use your eyeshadow palette and you're good to go. I'm using this shade called Heat. By the way, this is the 18 Hit Wonders eyeshadow palette from E.L.F Cosmetics. I'm just mixing both of these shades, just experimenting with makeup guys, and just apply this. I love the color. See, blend ho jaye. I like it. I like this blush. I mean, I made a custom color for myself, but sometimes you know what I like to do? I just close my eyes and just go like, I don't know, I just like the feeling and it just looks very blended and sorted. Just take a beauty blender just to, you know, so that there are no harsh lines. ये जो jelly highlighter था ना, उसकी वजह से यहाँ पे एक patch सा create हो गया, which is like annoying me so much. Anyways guys, let's move on to the highlighter. I'm just gonna fix my highlighter situation. This is like my favorite highlighter again. This is a 24K gold E.L.F highlighter. This is nice because this is like very subtle. इसका पता भी मतलब चलता है जब बिल्कुल light reflect करती है, और अब जितना मर्जी apply कर लो. This looks very natural and I like to apply it sometimes on the apples of my cheeks as well. When you smile, it just glows because ये बिल्कुल texture भी enhance नहीं करता है. So today we're gonna do like a very glowy, beautiful. I'm like super happy with my makeup. अभी तक तो कोई mistake नहीं हुई सिवाय वो powder के लिए. अगर आप मेरी series follow कर रहे हो तो आपको पता है रोज कुछ ना कुछ mistake होती है मुझसे. By the way, setting spray के लिए I used the E.L.F Matte Magic Mist and Spray. I really like it. थोड़ा सा fragrant है
but not too bad. Now I have two eyeshadow palettes. One is this, see, blush मैंने खरीदा नहीं और powder मैंने खरीदा नहीं, लेकिन मेरे पास दो eyeshadow palette है. मैं eyeshadow palette skip कर सकती थी, but I have this bite size eyeshadow palette and this looks really nice. This is I think in the shade Aqua. Acai is the shade name और इसमें काफ़ी सारे purple shades हैं. I think I'm gonna use this. And then I have this palette जो हमने of course blush के लिए use करा. This is nice. I've used it before. I'm gonna actually stick to the mini version today. Why not? तो इतनी ज़बरदस्त पैकिंग करते हैं ना ये कि खुलती ही नहीं है. Okay guys, since it's the mini palette, इसमें सिर्फ 4 शेड्स हैं और ये मुझे पर्पल टोन्स तो दे रहा है, बट काफ़ी ब्लूइश कूल टोन कलर्स भी हैं. तो आई एम जस्ट गोना मेक दिस वर्क. आई ऑल्सो हैव दिस अनदर आई शेडो जो मुझे नहीं चाहिए थी बट मैंने ख़रीदी बिकॉज ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है. दिस इज़ द लिक्विड मेटालिक आई शेडो फ्रॉम E.L.F. Okay, so I'm actually going to start off with the eye makeup now. Where is my brush? I'm gonna start with this shade. This is actually blue tone colors. I'm actually gonna use both the eyeshadows. देखते हैं कौन सा. तो यहाँ से मैं neutral shade उठा रही हूँ, ये वाला. Actually, I'm gonna start with the shade Summer. This looks really nice, this shade. And I'm just gonna apply the transition shade first, just to lay down the base as usual. This palette, by the way, you can get. It's really nice, pigmented. But इसका yellow shade इतना pigmented नहीं है. It's like okay. और इसका फॉल आउट भी है थोड़ा सा. मेरा आज दांत दुख रहा है, पता नहीं क्यों दांत दर्द हो रहा है. Next I'm going to be using this shade called बस transition shade के लिए I'm gonna use this palette now. Now I'm gonna use this shade. There's no name, so just apply this on the same brush, and this is like a blue tone shade, so I should be skipping that. So I'm actually gonna take this dark cool tone shade just to give dimension on the outer edges of my eyes because I have this purple liquid eyeshadow, thank God, to create a look. So pigmented, wow. Today I am going to be doing halo eyes, so I'm just gonna apply this on the outer edges and also on the inner part of my eyes. Wow, I love this palette. Oh my God, already. Okay, it looks a little weird right now, but it's gonna come together. I am now going to be using this slightly purple cool tone shade, मतलब just for the base. I can see कि इसमें shimmer shades इतने मुझे वो नहीं लग रहे हैं, reflective. Exactly, it's like very फीका सा shade है ये, but हमें सिर्फ base apply करना है. So I'm just going to apply this. We don't need any shine from you. Thank you very much. The matte shade perfect, but जो shimmer shades हैं not working for me in the palette. The liquid metallic eyeshadow. I know you all are waiting for this. Okay, this is so cute. This is so cute. It's like a mini version of liquid eyeshadow. Very cute. See, liquid eyeshadows are very easy, just apply, blend and you're good. If you want just एक eyeshadow apply करो. अब हम क्या करेंगे, बिल्कुल clean brush लेकर ना सिर्फ edges को blend करेंगे and we will go back and forth with the pigments, but जब तक आपको satisfactory result नहीं मिलता तब तक we will use that. तो अभी मैं mini palette फिर से ले रही हूँ and I'm going back with that dimensioned shade that we used earlier and just packing it right here. So this is how you do hello eyes. Using a very tiny brush to blend that out because it's a very dark shade. बहुत सारा फॉल आउट भी हो गया है unfortunately, but anyways I'm going to now just amp up the glitter, the metallic shade. This is bringing me back to my like college farewell days because I did a hello eye myself and I did the same look kind of, and I was so happy how it turned out. It was like a brown black shadow here and center में purple, so it's like bringing me back to that. Next is eyeliner. Okay, so I ordered for an eyeliner pen. This is how it looks like. This is like a black color pen. Okay, unboxing के बाद it looks something like this. I really like the packaging. This is in the color black and this is like a felt tip liner. Let's apply this. That was easy. I'm going to apply a winged eyeliner today. Alright guys, so the eyeliner is on. I think इससे better तो नहीं हो पाएगा. Lashes and mascara will make a huge difference. I'm gonna apply some lashes and mascara and I will be right back. A few moments later. Alright guys, so the lashes are on. यहाँ पे हल्का सा मस्कारा लग गया था और वो रिमूव नहीं हो रहा है for some reason. और मैंने लोअर लैश लाइन पे भी थोड़ा सा काजल लगाया था. अभी मैं फटाफट से अपने लिप्स लाइन कर रही हूँ. सेल्फ का लिप लाइनर नहीं है. मैं इसको इग्नोर करने की कोशिश कर रही थी बट मुझे बोलना पड़ा कि मेरे पास सेल्फ का लिप लाइनर नहीं है और सेल्फ में बहुत प्रोडक्ट्स मैंने गलतियाँ की हैं. Will forgive me for that. Now I am going to add this lip gloss which is going to be this lip gloss, this lip lacquer. By the way, K beauty का lip liner लगाया जो full face of K में लगाया था. This is it. So pretty. It's not too sticky but the shine is gorgeous.
Guys, this is the final look, you guys. I'm just gonna add some accessories very quickly and I will be right back. Alright guys, I fixed my mascara and everything and I'm here. This is the final look. What do you guys think? और मैंने pony ही करके रखी because it is actually looking really nice because थोड़े से puffy हो रखे हैं बाल, curly से हो रखे हैं and I think pony suits this look a lot. This is the dupatta. It's a very heavy dupatta. I love it. मेरा movie का time हो रहा है, so I hope you guys will understand. This is the final look. Let me know what you guys think. I really like it. To be honest, I love the overall result. Looks very pretty. I also added this skara. And yes, this is my purple makeup look for Navratri. Let me know what you guys think below. I will leave all the product details like usual below. And yes, I hope you guys enjoyed this video. If you did, then don't forget to like, share and subscribe to my YouTube channel and I'll see you in my next video. Bye!